Good morning and hello everyone. So we have finished our third chapter of your second volume, that is dual nature. That chapter has finished and I think you have got the assignment. So you try to solve the questions that is given in your assignment. Okay, all the questions, most of the questions we have already discussed in our class. So now we will start our fourth chapter of the second volume, that is your atom. Okay, so now we are going to start atom. So after atom, nucleus is there and semiconductor is there. Okay, so let us start with atom. So the topic here is atom. So I think you are already familiar with structure of atom from class 9. Okay, so in atom, so we know that our universe, this is basically consisting of matter. Matters are they are made up of particles and particles are made up of atom. Atoms are made up of electron, proton and neutron. Okay, so here we have to first discuss about the structure of atom. मतलब कहाँ से आया ये एटॉम का जो कंसेप्ट है, एटॉम देखने में कैसा होता है, इसके बारे में कहाँ से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला है अभी तक. ठीक है, सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट वी हैव टू स्टडी नाउ. सो आई थिंक इन योर क्लास 9 and in class 11 in chemistry you got structure of atom. In structure of atom, the first model of atom was given by Thomson. The first model of atom was given by Thomson, and after Thomson he is a student. उसका student था Rutherford. So Rutherford ने दिया था next concept of atom, and after that Bohr given the Niels Bohr. He gave the another model of an atom. So here we have to study about first Thomson model of an atom, then we will study about Rutherford model of an atom, and finally we will discuss about Bohr's model of an atom. So you guys are already familiar with this one, and this chapter is very easy. So focus in this chapter. इस chapters पे थोड़ा ज़्यादा focus करना. So here we will start from Thomson model of an atom. ठीक है? So first in this chapter we will discuss about the model of an atom. So model of an atom, the first one was given by J.J. Thomson. So this one is Thomson's model. The first we will discuss about Thomson's model. तो according to Thomson और according to J.J. Thomson, ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि uses atom they are spherical in shape. तो उसका first point था कि एटॉम जो होता है वो बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होता है. ओके, एटॉम्स आर बेसिकली स्फेरिकल इन शेप एंड ऑल द space within the atom is nothing but the positive charges, and electrons are embedded just like the seeds in a watermelon or plums in a pudding. So Thomson's this model is also known as plum pudding model. Okay, वो क्रिसमस पे बनाता है ना पुडिंग. सो वहाँ पे जो प्लम्स होता है तो यू जस्ट इमेजिन कि किस टाइप का होगा. मान लो यू जस्ट इमेजिन ए स्फेयर. ठीक है, उस स्फेयर में मैक्सिमम इट इज most of the portion it will be occupied by the positive charge and negative charge are nothing but the plums. और you can imagine कि एक वाटरमेलन है, उसका जो रेड कलर का जो पोर्शन होता है जो हम लोग खाता है, दैट इज सपोज मान लो पॉजिटिव चार्जेस, एंड द सीड्स जो वहाँ पे काला रंग का जो सीड्स होता है, these are your what? These are your negative charges. Okay, so according to Thomson this is the idea of an atom. Okay, according to Thomson this is the idea of an atom. और उसमें और एक चीज वहाँ पे था कि एटॉम पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज बराबर टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है. तो दैट इज बेसिकली एटॉम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस. ओके, सो दीज आर द आइडिया गिवन बाय द थॉमसन. तो लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम. तो सपोज दिस वन इज एक स्फेयर हम लोगों ने यहाँ पे इमेजिन कर लिया है. तो दिस स्फेयर एंटायर स्फेयर इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आर लाइक दिस. ओके, negative charges are uniformly distributed like this. So this is the Thomson's model of an atom. देखो negative charges they are uniformly distributed throughout the atom. Is that clear? These are like the seeds in a watermelon. मान लो ये पूरा watermelon है, तो बाकी जितना भी empty space यहाँ पे दिखाई दे रहा है, these all are positive charge, and the seeds they are nothing but the negative charge. So this portion it will be positive charge. This portion it will be your positive charge, and these are what? These are these are negative charges. Okay, so this is the Thomson's model of an atom. Okay,
तो लेट अस राइट समथिंग बेस्ड ऑन थॉमसन्स मॉडल. ओके, पॉइंट वाइज हम वहाँ पे लिखेंगे. तो लेट अस ट्राई टू राइट. ओके, थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नोट्स, तो इसीलिए मैं ऑलरेडी एक नोट है मेरा पास, तो वहाँ से मैं तुम लोगों को देता हूँ. ठीक है, वो नोट मेरा मोबाइल पे है, तो आई विल डायरेक्टली मेक ए शॉर्ट नोट फ्रॉम हियर. सो थॉमसन्स मॉडल पे क्या क्या था देखो. तो जैसे कि मैंने बोला कि थॉमसन कंसिडर्ड द मॉडल ऑफ एन एटॉम टू बी स्फेरिकल इन शेप. तो सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन उसका फर्स्ट पॉइंट ये था कि एन एटॉम is basically consist of a positively charged sphere, क्योंकि अगर नोट नहीं देने से तुम लोगों का ये चैप्टर 2-3 क्लास में ही खत्म हो जाएगा. तो एटॉम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड sphere, okay, of radius of the order of, उसका रेडियस कितना ऑर्डर का होता है, ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 meter, in which अच्छा inside this sphere, जो जैसे कि मैंने बोला था कि निगेटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो इनसाइड दिस स्फीयर जस्ट आई एम गोइंग टू राइट फ्यू पॉइंट्स. जो कहना था वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को. सो इनसाइड दिस स्फीयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड like seeds in a watermelon, or plums in a pudding, ओके, ये पुडिन हम लोग नॉर्मली क्रिसमस में बनाता है. ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड पॉइंट क्या था कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो एन एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे कि एटॉम इज इलेक्ट्रिकली what? Atom is electrically neutral. So these are the ideas given us by Thomson. तो थॉमसन्स का जो मॉडल था उसका लिमिटेशन क्या था. तो थॉमसन्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द रदरफोर्ड मॉडल. मतलब इसने कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं था. रदरफोर्ड ने क्या दिया था, रदरफोर्ड हैज गिवन अस, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ सेंचुरी कहता है. ठीक है, सो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, the biggest discovery of this century, that is the nucleus. The Thomson's model was unable to explain the concept of nucleus. So limitations पे हम लोग क्या लिखेंगे, limitations number 1, concept of nucleus was not given by Thomson. ओके, एंड बोर्स ने क्या दिया था. अकॉर्डिंग टू बोर वी गॉट द स्पेक्ट्रल सीरीज ना. फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को मिला था लाइमैन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज. तो दिस बोर्स थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन का यही सक्सेस था कि एटॉम इज न्यूट्रल. थॉमसन का जो मॉडल था उसका हाईलाइट क्या था कि एटॉम इज न्यूट्रल. रदरफोर्ड का मॉडल का हाईलाइट क्या था कि एटॉम का अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. एंड बोर का जो मॉडल था उसका हाईलाइट क्या था, दैट इज स्पेक्ट्रल लाइंस. बोर का जो हाईलाइट था ये था स्पेक्ट्रल लाइंस. सो थॉमसन्स मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑल्सो.
So it could not explain the origin of spectral lines. It could not explain the origin of spectral lines. So these are the observations from Thomson's model and these are the limitations of Thomson's model. तो थॉमसन्स मॉडल का एडवांटेज क्या था? वो था थॉमसन ने ये बोला था कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव, दैट इज एटॉम इज न्यूट्रल. और उसका मेन फेलियर क्या था? उसने न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं दे पाया वहां पे. एंड सेकेंड वन वाज that is what is the advantage of Bohr's model, that is the spectral lines. So the origin of spectral lines it could not be discussed with the help of Thomson's model, क्योंकि थॉमसन मॉडल में कुछ है ही नहीं. इस पे खाली एक ही चीज है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव. ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग थॉमसन्स मॉडल, नाउ वी विल गो टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटॉम, दैट इज ऑल्सो नोन एज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. ओके, so now we will discuss about the alpha particle scattering experiment. okay, तो तुम लोगों को शायद ऑलरेडी मालूम है कि what is alpha particle. so alpha particle means from the helium atom if you remove the 2 electrons then it will become alpha particle. तो हीलियम में कितना प्रोटॉन्स होता है? हीलियम में number of protons is equal to 2 and number of electron is also equal to 2. so if you remove 2 electron देन वहां पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज योर अल्फा पार्टिकल. सो मॉडल ऑफ एन एटॉम का जो सेकेंड पार्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटॉम. सेकेंड पार्ट इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटॉम. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटॉम. सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली विच टॉपिक वी विल डिस्कस? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे. एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या मिला था? दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस. सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विद इन ब्रैकेट discovery of what? Discovery of nucleus. न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ था? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. तो दिस इज द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटॉम पे यही चीज हम लोग को बेसिकली डिस्कस करना है कि व्हाट इज बेसिकली ए न्यूक्लियस. ओके, क्योंकि ऑलरेडी थॉमसन ने ये कह चुका है, थॉमसन ऑलरेडी टोल्ड दैट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड now Rutherford discovered the nucleus. So how he discovered nucleus? So this is you already know. So what do you mean by alpha particle? Basically मैंने ऑलरेडी बोला, तो मैं ये लिख के भी देता हूँ कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है. अल्फा पार्टिकल बेसिकली यहाँ पे देखो, दिस इज हीलियम. फ्रॉम हीलियम यू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन. ये था हीलियम. हीलियम से तुम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हीलियम प्लस 2. दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल. सो अल्फा पार्टिकल इज ए हेवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. इसको याद रखना कि अल्फा पार्टिकल इज ए हेवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इट हैज मास इज इक्वल टू व्हाट? इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है 4 मतलब वहां पे 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन का मास जितना होता है. तो अल्फा पार्टिकल इज क्वाइट हेवियर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे रदरफोर्ड ने क्या किया था? ही कंसिडर्ड gold foil. Why he has considered gold foil? क्योंकि gold is the most malleable and ductile element present in this earth. Okay, तो he make a thin sheet with the help of a gold foil. क्योंकि अगर हम लोग कोई दूसरा metal if we consider, then it will not be possible to make thin sheet just like gold. gold से जितना पतला शीट हम लोग बना सकेंगे वह उतना पतला मेटल का एक शीट और मेटल का फॉइल we cannot make with the help of other metals. okay, गोल्ड जो होता है वो सबसे डक्टाइल या मेलिएबल होता है ना, दैट इज वाई गोल्ड रदरफोर्ड यूज गोल्ड सो दैट कि जो मेटेलिक शीट होगा वो सबसे पतला होना चाहिए. ठीक है, तो रदरफोर्ड कंसिडर्ड गोल्ड फॉइल एंड ही पास्ड सम अल्फा पार्टिकल थ्रू द गोल्ड फॉइल. ओके, सो रदरफोर्ड he chose the gold foil
and this is suppose the gold foil here. The diagram is already available. So this is the gold foil here, and in gold foil these are suppose the atoms. ये dots क्या है that I will tell you later. Okay. So Rutherford observed that, and these are nothing but alpha particles. So Rutherford उसने यहाँ से कुछ अल्फा पार्टिकल भेज दिया, एंड दिस इज द गोल्ड फॉइल हियर. व्हाई उसने क्यों गोल्ड फॉइल कंसीडर किया था ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन from the Rutherford experiment was that the most of the alpha particle penetrate through the gold foil without any deflection. So he observed that when he sent the alpha particles, he observed that most of the alpha particles, almost you can say 99%, they deflect through the gold foil without having any deflection. So what does it mean? We are sending from this direction suppose some particles, and the particles are not deviating in any direction. So what does it mean? It means the particles are not experiencing any kind of repulsive or attractive force. That is why the particles are not deviating from their own path. So it means what we can conclude from that point? We can conclude from that point is that most of the space within an atom is empty. तो बाद में साइंटिस्ट को मालूम चला कि almost 99.96% of the total space within an atom is empty. So most of the alpha particle penetrate through the gold foil without any deflection, which indicates that most of the space within an atom, most of the space within an atom is empty. Okay, so this is the first observation and conclusion made by the Rutherford. Then Rutherford observed that some of the alpha particles like this one, और कोई एक पार्ट तुम लोग यहाँ पे ड्रॉ करो, suppose this one. So Rutherford observed that some of the alpha particles were deflected by a very small angle. Okay, so you can say this one, and this one, they are deflected from their original path through a very small angle. Okay, so this is the second observation. You already know these observations. ठीक है? So what is the third observation? A few number of alpha particles, that is 1 out of 8,000 alpha particles, they were deflected by an angle greater than 90 degree. So can you see this one and this one? Here the deflection angle is greater than 90 degree. So a few of the alpha particles, that is 1 out of every 8,000 alpha particles, were deflected by an angle 90 degree, and 1 out of 12,000 alpha particle, they retraces the same path. So can you see this? ये alpha particle जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, वो alpha particle जो जिस रास्ता से जा रहा था वो अपना ही रास्ता से वो रिटर्न हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे पेनेट्रेट विदाउट हैविंग एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब स्पेस जो है वो खाली है. लेकिन a few of the alpha particles, they are experiencing some deflection, na? So what does it mean? It means that within an atom there are some positive charges. Okay, and Rutherford observed that very few alpha particles, they retraces the same path. अब देखो, alpha particle is what? Alpha particle is nothing but positively charged particle. So when the alpha particles are traveling in this direction, if they retrace the same path, so what does it mean? Within an atom, at some point, there is a huge amount of positive charge. There is a region where positive charge is very huge. Okay, so suppose in this direction an atom is an alpha particle is supposed traveling in this direction, and at some point within the atom there must be a huge region of a huge positive charge. So that what will happen? The alpha particle, uska speed will keep on decreasing and decreasing due to the repulsive force. Finally at some point it will stop, and then it will retrace the same path due to the repulsive force. So Rutherford concluded that within an atom all the positive charge is supposed to be concentrated. क्योंकि अगर positive charge if the positive charges are in the manner of distributive system, then what will happen? इतना ज़्यादा repulsive force alpha particle को नहीं मिलता. So positive charge जो है, all the positive charges, they must be clustered at some point so that their resultant repulsive force will be more. So Rutherford concluded that first thing, within an atom most of the space is empty. Second thing, within an atom all the positive charge, that is the entire mass of the atom is supposed to be concentrated at a particular point, and that region is known as your nucleus. Okay, why I said that entire mass is supposed to be concentrated? क्योंकि
when Rutherford discovered all these things, at that time only electron and proton were discovered. So electron is negligible in mass. So when at that time when the mass of the atom is considered, then the scientists used to consider the mass of the proton. So within an atom, all the proton, that is all the positive charge, they are concentrated at a particular point. It means what? All the mass is supposed to be concentrated at a particular region, and that region is known as what? That region is known as your nucleus of the atom. Okay, so these black colored these dots, okay, these are nothing but the nucleus. So if an atom or an alpha particle is traveling in this direction towards the nucleus, then it will experience a heavy repulsive force, and finally the alpha particle will retrace the same path. So this is the observation made by the Rutherford. So I have already given you the observation, you write down the conclusion. This is the first conclusion, and second conclusion is the discovery of nucleus. So this is, you have to write it by yourself in your copy. Now the second thing is, when the alpha particle is traveling along the axis of the nucleus, ये nucleus है and this is the alpha particle. So the speed of the alpha particle, it will keep on decreasing and finally at some point it will come for momentarily rest. So this distance जहाँ पे the alpha particle will come for जहाँ पे alpha particle will go for a momentarily rest and the nucleus, इन दोनों के बीच में जो distance होगा, this distance is known as your distance of closest approach. So the minimum distance between the nucleus and the alpha particle is known as the distance of closest approach. So here we have to calculate first what is the value of distance of closest approach. So here you have considered this one is a what? This one is a gold foil. Okay, remember that. So now first we will consider distance of closest approach, and one more thing we have to discuss from here, that is impact parameter. So let us first discuss about distance of closest approach. So write down the definition of distance of closest approach, that it is the minimum distance that in between the alpha particle and the nucleus of an atom is known as the distance of closest approach for the alpha particle. So suppose you consider an atom. So the topic here is distance of closest approach. Okay, distance of closest approach, it is represented by R naught. Okay, so suppose you consider this one is suppose an atom here. So Rutherford said that within an atom at the center all the positive charge is supposed to be concentrated. So this one is the, तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवर हुआ है और ये तकरीबन अराउंड 1900 सेंचुरी का ऑब्जर्वेशन है. तो अब देखो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस हियर. So you have considered gold foil. So suppose the atomic number of gold is suppose Z. Okay. So what is the charge of the nucleus? देखो number of electron is equal to number of proton. तो इसका charge कितना होगा? तो न्यूक्लियस का charge होगा, सब इसका charge होगा से Q is equal to Z into E. Okay, charge of an electron. अच्छा, suppose this is the, यहाँ बाद में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा साफ रखते हैं हम लोग एटम को. इसका एटॉमिक नंबर है Z. ठीक है. तो सपोज दीज आर द सम अल्फा पार्टिकल्स. तो ये एक अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसका इतना यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा. इट विल सफर स्मॉल डिफ्लेक्शन. कैन यू सी देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन. अनदर अल्फा पार्टिकल, ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये देखो ये अभी न्यूक्लियस का पास आ गया ना. ये देखो ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस देखो फ्रॉम द न्यूक्लियस ज़्यादा था, तो इट विल सफर लेस डिफ्लेक्शन. लेकिन इसका थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो इट विल सफर सम मोर डिफ्लेक्शन. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दीज आर नथिंग बट अल्फा पार्टिकल. अच्छा, अनदर अल्फा पार्टिकल, इट इज सपोज ट्रेवलिंग along this direction, so it will deflect at an angle greater than 90 degree. At an angle greater than 90 degree. Okay. Another new alpha particle which is traveling in this direction, it will retrace the same path. So it will deflect by an angle greater than 90 degree. It will deflect at certain this angle. Another one
it will deflect at this angle. Okay, बात समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? यहाँ पे जैसा है वहाँ पे भी सेम है. So these are what? These are nothing but alpha particles. These are nothing but alpha particles. Okay, this distance can you see? Suppose ये न्यूक्लियस का ये फाइनल पोजीशन है, सॉरी अल्फा पार्टिकल का ये फाइनल पोजीशन है. सो ये जो डिस्टेंस है, distance between the alpha particle and the distance between the nucleus, this distance is known as your R naught. R naught मतलब distance of closest approach. अब देखो another important term that I told you, what is impact parameter? Impact parameter मतलब this is the axis passing through the nucleus also na. So the velocity vector of the alpha particle, the perpendicular distance between the velocity vector of the alpha particle and the axis passing through the nucleus is called impact parameter. So this is the impact parameter for this alpha particle. ये alpha particle के लिए impact parameter कितना होगा? इतना होगा. For this one this is the impact parameter, and for this one this is the impact parameter. So you can see that as the impact parameter is decreasing, the angle of deflection is also increasing, or angle of deviation. This is known as angle of deviation. इसको ऐसा जाना चाहिए था लेकिन वो अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है. So this is known as angle of deviation. So you can see as impact parameter this value is decreasing, and then what is happening? The angle of deviation is also increasing. When impact parameter is 0, मतलब when the alpha particle is traveling along the direction of the axis passing through the nucleus, तब impact parameter कितना होगा? 0, and at that time deflection will be what? It will be or equal to 180 degree. So let us first calculate about R naught. R naught मतलब distance of closest approach, and then we will write an equation for impact parameter. Impact parameter का जो वैल्यू होता है उसका डिराइवेशन नहीं है. तो व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल? देखो अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम +2. ओके, हीलियम +2 मतलब अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होता है? हीलियम में क्या होता है? देखो हीलियम में बेसिकली होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. ठीक है, इसको तुम हटा दो वहां से तो क्या रह गया? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन. तो व्हाट विल बी द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? 2 + 2 = 4. एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? +2 वहां पे लिखा हुआ है. तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? ट्वाइस E. ओके, डन. सो अब देखो यहाँ पे, so what is the velocity of this alpha particle? Suppose the velocity of the alpha particle here is equal to v. So when the alpha particle will travel in this direction, then what will happen? The kinetic energy will keep on decreasing due to the repulsive force from the nucleus. So kinetic energy will decrease, and then what energy will increase? Potential energy will increase. Okay, I think in potential and capacitance you have studied about the potential energy due to a system of charges. So what will happen? Kinetic energy will keep on decreasing. Why? Because velocity is decreasing or speed is decreasing. So and potential energy will increase. At this point, जो ये point है यहाँ पे this point is suppose O. So at the point O, the alpha particle, it will come to rest, na? So at this point, what is the velocity or speed? It will be 0. So your kinetic energy will be 0. So at point O, all the kinetic energy will be converted to potential energy. So that thing we have to use here, that energy is conserved, and at point O all the kinetic energy will be converted to potential energy. So तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. while moving towards the nucleus, comma, the energy, or you can say the kinetic energy of the alpha particle, decreases due to the electrostatic repulsion, from the nucleus. Okay, so what is that force?
you can calculate that force also, that repulsive force, or you can directly say force is given by, तो कूलम्ब्स लॉ याद है ना सब लोगों को? सो फोर्स इज गिवन बाय, अच्छा इसका चार्ज कितना है? ट्वाइस ई, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस हियर? इसमें ना इसका एटॉमिक नंबर है Z, तो इसका चार्ज होगा Z मल्टीप्लाइड बाय E. सो द फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू, यू नो दिस फॉर्मूला, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by what? Twice E into JD divided by R naught square. ये फोर्स कहाँ पे होगा? एट दिस पॉइंट, जब ये पार्टिकल विल रीच द पॉइंट O, तब डिस्टेंस कितना होगा? R naught होगा ना? अच्छा, so from this paragraph we can write, therefore kinetic energy decreases and potential energy increases. Okay, at point O means which is the minimum, means this point beyond which the alpha particle cannot travel. So at point O, all the kinetic energy will convert to potential energy, because यहाँ पे kinetic energy कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे velocity और speed कितना है? यहाँ पे point O पे speed हो गया 0. So all the kinetic energy will convert to potential energy. तो kinetic energy is equal to potential energy. So kinetic energy का formula क्या है? Half of mv square. And what is the formula of potential energy in between two charges? You know that the formula of potential energy is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R. अगर नहीं मिला है अभी तक तो इसको याद रखना कि what is the potential energy between two charges? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. So it will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by, instead of Q1 I will write here twice E into ZE divided by R naught. So the value of R naught will be, that is distance of closest approach, it will be 1/4 pi epsilon naught, okay, 2 times of JD square divided by half of mv square. So this is the equation of distance of closest approach. Okay, R naught is equal to 1/4 pi epsilon naught twice ZD square divided by half of mv square. Done. You remember this formula of potential energy here. Acha. So after that our next topic, as I said, it is the impact parameter. So what is impact parameter? This distance. And impact parameter is different for different particles. Okay, ये देखो, ये इस लाइन से जा रहा था. This is the velocity vector of say alpha particle numbering 1. This is the velocity vector of alpha particle say numbering 2. This is 3, 4, 5, 6 and 7. So for 1 this distance is more, and for 2 ये थोड़ा कम है, for 3 के लिए और कम है, for 4 के लिए distance है ही नहीं. So the perpendicular distance between the velocity vector of alpha particle and the axis passing through the nucleus is called impact parameter. So इम्पैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर. So in impact parameter is represented by the letter B. So what is the definition? देखो, जैसे कि मैंने बोला, it is the or you can write the perpendicular
the perpendicular distance between the velocity vector of किसका velocity vector of alpha particles, the perpendicular distance between the velocity vector of alpha particles and the axis passing through the nucleus is the perpendicular distance between the velocity vector of alpha particle and the axis passing through the nucleus is called impact parameter, which is represented by the letter B. So you can see that as the impact parameter is decreasing, then the angle of deviation is increasing. So with decrease in the value of impact parameter, what will happen? Angle of deviation, impact parameter, comma, angle of deviation, क्या होगा? Angle of deviation, or you can also say angle of scattering, angle of deviation of alpha particle increases and when B is 0 and when B equal to 0, so you look at this alpha particle which is traveling along the direction of nuclear axis, इसके लिए इस perpendicular distance कितना होगा? 0, and when B is 0, comma, then the angle of scattering or deflection, of alpha particles becomes 180 डिग्री. तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला डायरेक्टली वी हैव टू राइट. सो द फॉर्मूला इज, एक मिनट, फॉर्मूला का डिराइवेशन नहीं चाहिए, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला. So the formula is impact parameter, that is B equal to 1 by 4 pi epsilon naught Z E square cot theta by 2 divided by kinetic energy, okay, means half of mv square. So this is the value of impact parameter, okay. 1 by 4 pi epsilon naught Z E square cot theta by 2 divided by kinetic energy. So ये देखो यहाँ पे when impact parameter का वैल्यू 0 होगा, when B is equal to 0, then from this expression what you can write? Cot theta by 2 will be 0. Cot theta का वैल्यू कब 0 होता है? When the value of cot theta is 0, when it is theta by 2 is equal to 90 degree, cot 90 is 0 na. So theta by 2 is equal to 90 degree. तो theta का वैल्यू कितना होगा? Then theta will be or equal to 180 degree. So these are the two things that we have to discuss from Rutherford model of an atom. Okay, so you have to write down the conclusion from the Rutherford's model of an atom. So conclusions जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्लास पे, उसको थोड़ा सा मैं फिर से तुम लोगों को रिपीट कर देता हूँ. ट्राई टू मेक ए नोट फ्रॉम देयर. दैट इज एवरी एटॉम कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी सेंट्रल कोर called the atomic nucleus, in which
the entire positive charge and almost the entire mass of the atom are concentrated. ये first you can say conclusion. The size of the nucleus is of the order of, you already know, the size of the nucleus is very small, that is 10 to the power minus 15 meter, okay, which is very small as compared to the size of the atom, which is of the order of 10 to the power minus 10 meter. The atomic nucleus is a number of electrons. As atom is electrically neutral, the total negative charge must be equal to what? Total positive charge. तो देखो ये atom है, तो यहाँ पे at the center all the positive charges are there. So electrons will be what? They will be in distributed format surrounding the nucleus. Okay, this is the third observation. So while the electrons are traveling, or while the electrons are revolving around the nucleus, then what is the energy that we have to discuss now? What is the energy possessed by the electrons? So the topic here it will be energy of the electron in an orbit. तो actually orbit का concept Rutherford ने नहीं दिया था. तो what will happen to the energy? The electrons are revolving around the nucleus na in this model. So what will be the energy that will be possessed by the electrons? Let us discuss that. So energy of electrons revolving around the nucleus, क्योंकि ऑर्बिट तो यहाँ पे हम लोग लिख नहीं सकेंगे क्योंकि ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था बोर साहब ने, ठीक है. सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और एक चीज हम लोगों को और डिस्कस करना है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो किधर फेलियर हो गया, ठीक है. और एक चीज याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो रदरफोर्ड ने नहीं किया था. रदरफोर्ड ने खाली कंसेप्ट दिया था, लेकिन द एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी में किया था वो रदरफोर्ड का दो स्टूडेंट, एक जेजर एंड मार्सदेन, उन दोनों ने किया था. लेकिन उन दोनों को नाम कोई याद नहीं रखता है क्योंकि थेसिस जो बनाया था वो रदरफोर्ड ने बनाया था इसीलिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म उसका स्टूडेंट ने किया था. और थॉमसन था, रदरफोर्ड था थॉमसन का स्टूडेंट, ठीक है. सो लेट अस गो टू इट. That is energy of electron. So energy of electron, अब देखो क्या होगा. Energy of electron revolving, energy of electron revolving around the nucleus. अब देखो according to Rutherford उसका बेसिकली फेलियर भी हम लोग देख लेते हैं. तो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. तो उसका फेलियर क्या था देखो. तो रदरफोर्ड ने ये बोला था कि मान लो ये न्यूक्लियस है, तो एन इलेक्ट्रॉन सपोज राइट नाउ एट दिस पोजीशन, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना. So when the electron will start revolving, it will experience the force of repulsion. So what will happen? Force of attraction, because electron is a positively charged particle. So what will happen? ये देखो, ये यहाँ पे क्या था, ये था इलेक्ट्रॉन. So it will experience a force of attraction ना from the nucleus. So what will happen? Since it is experiencing a force of attraction, so इसका radius will what? It will keep on decreasing and decreasing. इसका रेडियस जो है इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन विल मार्ज इनटू द न्यूक्लियस. तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे मार्ज हो गया, इसका मतलब व्हाट विल हैपन? इसका मतलब सत्यानाश हो गया. क्यों? देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो इसका मतलब when the electron will enter into the nucleus,
then electron will be destroyed, वो destroy हो जाएगा वहाँ पे. तो can you destroy some particle? No. Okay. देखो वो न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन था बाहर में, ठीक है. So according to the Rutherford, that electron will experience a force of attraction which is given by 1 by 4 pi epsilon naught twice Zd square divided by distance is suppose r. वहाँ से वहाँ तक distance r है. Oh sorry, Coulomb's law है ना, तो r square. So due to this force of attraction, this electron will move towards the nucleus and finally the radius will keep on decreasing and decreasing. So the electron will finally merge into the nucleus, which is not possible. क्योंकि we cannot destroy mass, we cannot create mass. तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ तो मास है उसका. So entire mass of the electron will be destroyed, which is not possible. So this is the failure of Rutherford's model. अब देखो, this electron is moving in a circular path. Okay. So what will be the force? The force is already given by, the force experienced by the electron is 1 by 4 pi epsilon naught twice z e square divided by r. What is r? R is the radius of the path. Okay. Acha, we already know that if a particle is moving in a circular path, it requires a what? It requires a centripetal force. So who will provide the necessary centripetal force? This Coulomb force will provide the necessary centripetal force. So from here what we can write? That who will provide the centripetal force? Centripetal force will be provided by the electrostatic. Centripetal force will be provided by the electrostatic force. So what is the formula of centripetal force? You know that the formula of centripetal force is given by mv square divided by r. And electrostatic force ये ऑलरेडी यहाँ पे है, विच इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस जेड ई स्क्वायर, अरे यहाँ पे एक स्क्वायर चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो आर एंड आर कैंसिल, सो एम वी स्क्वायर विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी देन? So kinetic energy का वैल्यू कितना होगा? Can we directly use this formula to find out kinetic energy, that is twice z e square? So mv square is equal to this much. So this 2 we cannot write here 2 क्योंकि this is the force of attraction. ये किसका अंदर में था? This is the force of attraction between the alpha particle and the nucleus of the gold. Okay, but here we are considering only a single electron. So let us write here the charges are E into, इसका भी charge कितना होगा? This is a single proton here, so E into E. Okay, so then it will be this much. So electric force will be 1 by 4 pi epsilon naught E square. So mv square by r will be 1 by 4 pi epsilon naught E square, because twice z e square मतलब कहाँ से आया था? देखो, twice E jd multiplied by twice E, but we are not considering here that model. So we are considering here simply the revolution of the electron ना. So यहाँ पे इन दोनों को multiply करने से कितना होगा? Twice z e square. But here we are considering a single electron and a single proton and a nucleus consisting of a single proton. Okay, so mv square 1 by 4 pi epsilon naught, ये यहाँ पे नहीं चाहिए. So काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? दिस इज हाफ ऑफ mv square, so it will be half into E square divided by 8, it will be 4 pi epsilon naught into r. So kinetic energy will be E square divided by 8 pi epsilon naught into r. Okay, so what will be the potential energy? This is failure, huh? So the potential energy
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज कितना था E, सो इट विल बी E, वो वाला चार्ज क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, सो इट विल बी माइनस E square divided by distance is r. R is the radius of the orbit, so it will be potential energy is represented by U, so it will be minus U square. Okay, so total energy कितना होगा, you know that the total energy is equal to kinetic, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. This is E square divided by 8 pi epsilon naught r minus E square divided by 4 pi epsilon naught r. So take the LCM. LCM will be 8 pi epsilon naught into r. So it will be 8 minus. So it will be minus U square. Okay. So this is the equation of total energy. So total energy of an electron revolving in the Rutherford's orbit, ये किसका orbit है, Rutherford का orbit, is equal to minus U square divided by 8 pi epsilon naught r. Potential energy is that much, and this is the kinetic energy. So you try to find out the relation between total energy, which is E, U, and kinetic energy. इसका रिलेशन क्या होगा, ये इक्वल तो नहीं होगा, सो इसका रिलेशन क्या होगा, तो ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन.